हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे, कीपिंग क्वाइट, विच इज़ रिटन बाय पाब्लो नेरूदा। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो एक बेसिक थीम हम पहले पढ़ लेते हैं, दैट इज वी नीड टू लर्न अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, विच इज़ थिंकिंग डीपली एट अ हायर लेवल। नाउ इसमें ही आप देख सकते हैं आयरनी कि वी हैव टू थिंक डीपली, यानी डीप नीचे होता है, एट अ हायर लेवल, and that all human race bonded together, which is an abstract that we'll be learning about, and that mutual understanding of peace, love and harmony. So this is basically the theme of this poem, and now let us start with the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now इसमें सबसे पहले why is this starting कि now we will count to 12. Why the number 12? तो number 12 इसलिए है because there are 12 months in a year, there are 12 zodiac signs, 12 numbers in a clock. So that is why the number 12. Then he's asking us to not speak in any language. Why not to speak in any other language? Because now at this time when we are introspecting, जब हम शांत बैठे, when we are thinking, there's only going to be one language, that is language of silence, language of introspection. So हम अपनी language के basis पे divide नहीं हो सकते, कोई यहाँ पे हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, हम नहीं divide होंगे. जब आप शांत है तो सिर्फ एक ही language है, language of silence. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now here, arms, first of all, this is a pun. So what does a pun mean? Pun is double meaning. So arms so much, it means physically let us not move, sit and relax and introspect. And arms also suggest the guns and the destruction. You know, arms and immunization that we do, we should not do it. Let's not move it. Then it would be an exotic moment, without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Now sudden strangeness, alliteration है पहली बात, उसके बाद this is a piece of new kind. Why? Because this is going to be an exotic moment where we will not be divided on the basis of what we do. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पहले बताया था, लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड नहीं होंगे, तो और इस जब हम साइलेंस पे होंगे तो कोई इंजन्स नहीं चलेंगे, कोई रश नहीं होगा, एंड ये बहुत ही एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब एक नया टाइप का पीस होगा ये, जब हम सब लोग शांत बैठेंगे. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at it hurt hands. इसका मतलब है कि जो फिशरमैन है, जो सी में जाते हैं, बेसिकली इस पैरा का मतलब क्या है समझाने से पहले इसका मेटाफोरिकल मीनिंग समझते हैं. दैट जब हम लोग शांत बैठेंगे, तो यहाँ पे जैसे फिशरमैन का एग्जांपल दिया है, सो इसका मतलब है जब हम शांत बैठेंगे तो कोई भी हम डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम अपनी आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन मूव नहीं करेंगे, एंड हमारा जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में जो हम मरीन लाइफ को ख़राब करते हैं, फिशरमैन जो उनको लेकर बेल्स को डिस्टर्ब करके, फिशेस को डिस्टर्ब करके, वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो शांत बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा कि मैं कलेक्ट करते करते कितना ज़्यादा मैं खो गया हूँ अपने काम में कि मैं देख ही नहीं पा रहा कि आई एम गेटिंग हर्ट, मुझे मेरे हाथों पे चोट लगी हुई है. सो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कहाँ पेन हो रहा है, आपको कहाँ हर्ट हो रहा है, एंड यू मूव ऑन फ्रॉम दैट व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट. सिर्फ काम 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 नहीं होता, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू रिलैक्स, यू हैव टू थिंक and then introspect. So this is what I have written here. Time to think about himself, that is pain, hate and hurt. And जो destructive actions है जो fisherman के, वो है habitatal grave बना देता है एक sea को. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. So इसमें basically बनता है wars, first of all green wars, of course that means war with nature, with our environment, and these are also our biological. Green wars basically means using our biological weapons, जैसे आपके nuclear weapons जो होते हैं ना mass destruction के लिए. Then wars with gas, chemical warfare, wars with fire is nuclear warfare. Victory with no survivor, that means that when we are fighting with somebody, and जब आपके दोनों साइड के लोग मर जाते हैं, दोनों के साइड के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, then there is victory with no survivor. यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन है कि देखो आप when you are fighting with the earth, आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हो अर्थ के ऊपर, so end में अर्थ आपके लिए रहने लायक जगह नहीं बन पाएगी. So there is going to be victory with no survivor. आप खुद ही जिंदा नहीं रह पाओगे, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो. Then
we would put on clean clothes and walk about with their brothers. So that means all the people who are doing this, the powerful people, the politicians, the bureaucrats, these people are doing this. So when they will sit and they will introspect, they will think, and then they will put on clean clothes. Clean clothes mean that they will now, change themselves. They will think and they will change, and then they will walk with their brothers. In the shade, doing nothing. Doing nothing means that they will not indulge themselves in any violent activities. अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे. That means doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. इधर इसका मतलब है कि आई डोंट वांट एनीबडी टू कंफ्यूज दिस विद टोटल इनएक्टिविटी. सो इसका मतलब है कि जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट हो कि शांत बैठो, इसका ये मतलब नहीं कि आप बैठ जाओ एंड आप टोटल इनएक्टिविटी करो, कुछ काम नहीं करे, कुछ सोच भी नहीं रहे. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर आपका फिजिकली इफ यू आर नॉट एक्टिव, मेंटली आप चीज़ें नहीं सोच रहे हो, देन दैट इज इक्वल टू बीइंग डेड. यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ है पॉइंट कि नॉट टोटल इनएक्टिविटी, ही इज नॉट प्रमोटिंग इट, एंड आइडियाज शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टिव विद आइडियाज ऑफ डेथ. ठीक है, क्योंकि this is again an idea of death if there is mental passivity and lethargy. Life is what it is about, and I want no truck with death. So first of all, इसका figure of speech is euphemism, and इसके बाद इसका मतलब है यही वो दोबारा बता रहे कि मुझे कोई, this is like a, आप लोग क्या कहते हैं, कहावत है एक टाइप की कि I want no truck with death. What I'm saying, introspection should not be confused with total inactivity. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. That is, इसका मतलब अगर हम इतने ज़्यादा फोकस ना हो ना कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो मे बी हम शांत होकर बैठ के सोचेंगे कि हम जो हर्ट, सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जाम्पल था कि वाई वी आर सो हर्ट एंड हमारा पेन, एंड जब हम इसके बारे में सोचेंगे तो ये जो हमें चीज़ें हैं हमको खुद को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी कि वाई डू वी वॉन्ट टू डू दिस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सो व्हेन वी विल इंट्रोस्पेक्ट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ. यहाँ पे हम खुद को थ्रेटन करते हैं ऑफ डेथ, एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट. इट इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस विच कम्स टू एवरीबडी, एंड वी शुड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड बी एट पीस विद इट. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो अर्थ है जब आप उसे दूर से, इसका मतलब है कि जब हम बेसिकली चाहते हैं कि जो हमारी अर्थ है जब आप उसे दूर से देखते हैं तो लगता है कि कुछ मतलब इट्स लाइक नथिंग. अगर आप एक गार्डन को देखें दूर से तो आपको नहीं लगेगा ना कुछ लिविंग है, इट्स ऑल स्टिल नॉन लिविंग. But when you go inside, when you see that the leaves, they are growing, there are certain insects inside, the bark of the tree, it is growing, changes are occurring. So basically that is what it is कि आप दूर से देखते हो तो आपको लगता है कोई change नहीं हो रहा, but when you go close to it, changes are happening. So this is what we can learn from our Mother Earth. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So basically जहाँ से start हुई थी poem, it is ending on the same note that again we will count to 12. Again revise करते why 12, because 12 are months, 12 are zodiac signs, 12 are the numbers on a clock. And then why do we keep like quiet? What will we acquire? We'll acquire tranquility, and we will acquire, this will be an antidote to a war. Thank you, and please subscribe to my channel.